हरे हरे। तो हम सब बहुत बहुत स्वागत करेंगे हर ग्रेस सुखवाहा माता जी का। आप तो जानते हैं माता जी बहुत विशेष रूप से यहाँ आई हैं और बहुत ही हमारा सौभाग्य है। माता जी इज़ अ वेरी सीनियर डिसाइपल ऑफ श्रील प्रभुपाद और ये माता जी कल भी हमारे बीच अपना संग दिया है और आज भी माता जी इज़ अवेलेबल फॉर अस। तो आज की भागवतम कक्षा में माता जी का बहुत बहुत स्वागत है और हम सब बहुत बहुत आभारी हैं माता जी के लिए। तो बहुत उत्साह के साथ माता जी का स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Mate, really, again we are so fortunate. It's our great fortune that again you're here, and we are having a feast of so nectarian lecture and your blessings. So again, we are welcoming you very heartily. Welcome here in Radha Govind Dham. Hare Krishna. और अनुवाद करेंगे His Grace नाम गोविंद प्रभु जी। प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे। पिछले कई दिनों से प्रभु जी हमारे बहुत ही he's nicely translating. तो माता जी he is very good in translation, so please bless him so that he can also translate you in a very efficient way. तो प्रभु जी का भी धन्यवाद करेंगे। कई प्रभु जी इतना हेल्प करते हैं हमें ये संग करने के लिए। जो लोग हिंदी समझते हैं तो प्रभु जी का धन्यवाद करने के लिए बहुत ही एंथुसियास्टिकली हम लोग सेंड करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये सच में बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मैंने कई बार बोला कि इट्स अ वेरी रेयर मोमेंट फॉर अस बिकॉज प्रभुपाद डिसाइपल्स आर सो रेयर नाउ एंड वी हियर इन फरीदाबाद इज very rare for us to have association of the devotees like Mataji. So Mata, again thank you so very much for this blessing. तो आप सबसे निवेदन है आप सब अपने मोबाइल फ़ोन जो आपको बहुत प्यारे हैं उनको स्विच ऑफ कर लीजिए या तो साइलेंट में कर लीजिए, बहुत डिस्टर्ब करता है क्लास में। एंड अगेन थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। Radha Madhava Kunja Bihari Janavallabha Girivandadari Jaya Gopi Janavallabha Girivandadari Yasodanandana Brajajana Ranjana Yasodanandana Brajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya
Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Gurudev, Jaya Gurudev. Srila Prabhupada ki jai, Jai Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. So we're just going to read, we're not going to do the text. We'll just read the translation, the purport from verse 7, 8, 9. Canto 7, chapter 8, verse 9. तो आज हम श्लोक स्कंद 7 अध्याय 8 और श्लोक संख्या 9 इसे
अनुवाद और तात्पर्य पढ़ेंगे। So why don't you just read it in Hindi? I think everybody can understand. Canto 7, chapter 8, verse 9. This 7, 8, 9. Prahlad continued. Prahlad Maharaj continued. Okay. My dear father. Okay. भक्त प्रहलाद महाराज ने कहा, हे पिता, कृपया आप अपनी आसुरी प्रवृत्ति त्याग दें। आप अपने हृदय में शत्रु मित्र में भेदभाव न लाएं। आप अपने मन में सबके प्रति समभाव रखें। इस संसार में अनियंत्रित तथा पथभ्रष्ट मन के अतिरिक्त अन्य कोई शत्रु नहीं है। जब कोई मनुष्य प्रत्येक व्यक्ति को समानता के स्तर पर देखता है, तभी वह श्री भगवान की ठीक से पूजा करने की स्थिति में होता है। तात्पर्य, जब तक मन को श्री भगवान के चरण कमलों में स्थिर नहीं कर लिया जाता, तब तक मन को वश में कर पाना असंभव है। जैसा कि अर्जुन ने भगवद गीता में कहा है, चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरेव दुष्करम। हे चंचल, हे कृष्ण, मन चंचल, उद्दंड, जिद्दी तथा अत्यंत प्रबल होता है और मेरी समझ से इसे दमित कर पाना वायु को नियंत्रित करने की अपेक्षा अधिक कठिन है। मन को नियंत्रित करने की एकमात्र प्रामाणिक विधि है मन को श्री भगवान की सेवा में स्थिर कर देना। हम अपने मन के आदेशानुसार शत्रु तथा मित्र बनाते हैं, किंतु वास्तव में न तो मित्र होते हैं न शत्रु। पंडिता समदर्शिना सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। इसे समझना ही भक्ति के राज्य में प्रवेश करने की प्रथम शर्त है। Om Jnanatimrandasya Jnana Shalakaya Chakshur Ummilitam Yene Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijama Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopish Gopika Kanta Radha Kanta Namostake Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutta Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatubhyascha Kripa Sindhibhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. I was born in the darkness of ignorance, and my spiritual masters are kindly continuing to open my eyes, shine the light on my soul. Day after day, I offer my respectful obeisances again and again. तो मैं श्रील प्रभुपाद जी को प्रणाम करती हूँ, जो दिन प्रतिदिन मेरी चक्षु को ज्ञान रूपी अंजन से खोल रहे हैं। Dear Srila Prabhupada, dear Krishna, please allow this class to be relevant for all of us. तो श्रील प्रभुपाद जी, कृष्ण भगवान कृपया करके इसे स्वीकृति दीजिए कि आज की कक्षा लोगों के लिए प्रासंगिक हो। Please allow us to hear your words in a new way. कृपया करके हमें स्वीकृति दीजिए कि हम आपके शब्दों को नए तरीके से सुन सकें, so we can apply them in our life. तो जिससे हम अपने जीवन में इसको उतार सकें, so they become real तो ये वास्तविक शब्द वास्तविक बने and realized. और फिर उसका साक्षात्कार कर सकें। So you become real, so our relationship becomes real. तो आप हमारे लिए एक वास्तविकता हो, तो और हमारा संबंध भी एक वास्तविकता हो। Hare Krishna.
Good morning. Nice to see all you bright faces here so early in the morning. Today's class is entitled Friends or Enemies. तो आज के कक्षा का शीर्षक है मित्र और शत्रु. I'm just waving to the ladies in the back because they don't always get acknowledged because they're way in the back. I'm just acknowledging the ladies. Go ahead, you can say that. तो माता जी कह रहे हैं आप लोग पीछे बैठे हैं तो आपको भी वो धन्यवाद कर रही हूँ. Yes. So, here in this verse, Prahlad Maharaj is talking to his father. तो यहाँ पे प्रहलाद महाराज अपने पिता से बात कर रहे हैं. Please give up your demoniac mentality. Do not discriminate between friends and enemies. तो आप अपनी आसुरी प्रवृत्ति को त्याग दें और मित्र शत्रु के बीच में भेद करना छोड़ दें. So let's think about this. What qualifies someone as an enemy? तो उसके बारे में सोचते हैं थोड़ा. तो कैसे कोई व्यक्ति हमारा शत्रु बन जाता है? What makes someone an enemy? क्या दूसरे व्यक्ति को हमारा शत्रु बना देता है? क्या चीज ऐसी है? Words, maybe harsh words. I'm sorry? I can't hear you. Our thinking, yes, that has something to do with it. In general, for the general public, what would make someone an enemy? सामान्य रूप से क्या किसी को हमारा शत्रु बना देते? क्या चीज़ ऐसी है जो हम किसी को हमारा शत्रु बना देते हैं? What do you say? When our interests or beliefs clash. तो जो हमारे जो रुचि है, हमारी जो विश्व जो हमारे अस्तित्व है वो किसी और से टकराता है, तब जाके जो है इसमें विरोधाभास उत्पन्न होता है. This is a big thing. ये बहुत बड़ी चीज़ है. We think people who agree with us are our friends. तो हम सोचते हैं कि जो हमारे साथ सहमत हैं वो हमारे मित्र हैं. And we think people who disagree with us are our enemies. और जो हमारे साथ असहमत हैं वो हमारे शत्रु हैं. Interesting. तो ये रुचिकर है. So, if we decide that we want to do something illegal, तो हम जब कुछ सोचते हैं कि हमें कुछ ऐसा जो निषेध कार्य में करने जा रहा हूँ, and there are a few people around us who say, yes, that's a good idea. तो फिर हमारे आसपास कुछ लोग होंगे बोलेंगे हाँ हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है. We think they're our friends सोचते हैं कि ये तो हमारे मित्र हैं, because they agree with us. तो ये हमारे साथ क्योंकि सहमत हैं. If someone maybe sees some activity that we're doing that might be harmful for our spiritual life, तो कोई हमें देख सकता है कि हम कुछ गतिविधि ऐसी कर रहे हैं जो हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए नुकसानदायक है, and they mention that to us as feedback, और वो हमें बताते हैं एक फीडबैक के रूप में, एक कह सकते हैं टिप्पणी के रूप में, we might take offense हम उसका हो सकता है अपराध ले लें, and think they're our enemies. सोचते हैं कि वो हमारे शत्रु हैं. Now let's look at Prahlad and Hiranyakashipu. हम देखते हैं प्रहलाद के बारे में और हिरण्यकशिपु के बारे में. So let's look at the qualities of, let's just even say any 5-year-old. What's the quality of a 5-year-old? तो कोई भी 5 साल का बालक है, उसके में क्या गुण होंगे, क्या योग्यता है? Innocent. तो वो मासूम होगा. Whoever gives him love, he likes that. He doesn't. Yeah. Go ahead. तो Let him translate that for a minute. तो जो बालक है वो किसी का पक्ष नहीं लेता, पक्षपात से रहित होता है. जो भी इसको प्रेम करता है वो इसी की तरफ हो जाता है.
simple. सरल होता है. Simple. 5-year-olds are simple. They just say what's there for them. They don't have all these sophisticated filters of I can't say that, I can't say that. They just say what's there. तो वो उनके ऊपर बहुत कई सारे जो हैं वो जटिलताएं नहीं होती, वो जो होता है जो अनुभव करते हैं वो बोल देते हैं. Simple also can mean that they're honest. सरलता का मतलब ये है कि वो ईमानदार हैं. Children aren't usually that great at lying. They're not really good at lying. Kids are not good at lying. तो बच्चे झूठ बोलने में अक्सर बुरे होते हैं, वो झूठ नहीं बोल पाते. And if they are lying, you can usually tell. और वो झूठ बोल रहे हैं तो आप बता सकते हैं कि झूठ बोल रहा है. Yes, they're simple, they're innocent. Let's see, what other qualities? There's a couple more here. Generally, kids are, because they're smaller and littler, what do they have to do, kind of? तो छोटे होते हैं वो तो क्या करते हैं? They need to be a little subservient, right? Because they're subservient, they have to be a little bit of submissive because they're littler and everybody else around them is bigger. तो उनको किसी न किसी साथ रहना पड़ता है क्योंकि और सारे लोग बड़े हैं, वो छोटा है बहुत. Yes, and another quality of children is that they're really curious. और एक गुण होता है बच्चों में कि बहुत ही जिज्ञासु होते हैं. They want to know why. They want to know everything. They're curious. They're open-minded and curious. तो बच्चे हैं खुले दिमाग के होते हैं और जिज्ञासु होते हैं, जानना चाहता है ये क्यों है, ये क्यों है, ये कैसे. And that's why they can learn so much so fast. They're so open. इसीलिए वो जल्दी से चीज़ों को सीख पाते हैं और शीघ्रता से किसी भी चीज़ को ग्रहण कर सकते हैं. So now let's look at the demoniac mentality, Hiranyakashipu. तो हम अब देखते हैं आसुरी मानसिकता क्या होती है हिरण्यकशिपु की. What are some qualities of Hiranyakashipu? क्या योग्यता या क्या गुण कह सकते हैं हिरण्यकशिपु के अंदर क्या? He wants to be the only enjoyer. तो खुद ही भोक्ता बनना चाहता है आसुरी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति. Okay. What other qualities? Well, that's not as significant. There are other people who are austere besides demons, and he only performed his austerity for a certain time. After that, he didn't. So. तो ऐसा नहीं कि हमेशा आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग तपस्या करते हैं. हिरण्यकशिपु ने कुछ समय तक तपस्या की थी, उसके बाद उसने छोड़ दी थी. As a demon, what were his qualities? He not used to respect others' opinion. Yeah, he was dominating. तो वो किसी और के सलाह को कोई सम्मान नहीं देते थे. Controlling. Oh, sorry. What were you going to say? Exploiting mentality. Exploiting तो mentality. शोषण के भाव से पूरी तरह से भरे हुए थे असुर लोग. Controlling. नियंत्रण करना चाहते. Yes. तो अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं. Arrogant. दंभी मानते हैं. As opposed to simple. और जो कि सरलता के पूरा विपरीत है. Arrogant as opposed to submissive. विनम्रता के शरणागति के पूरा विपरीत है. Also, the thought process is very complicated. और उनकी जो विचार करने की प्रक्रिया है वो बड़ी जटिल है. As opposed to simple. सरलता के विपरीत पूरा. Like political, like you have to work all the angles in order to manipulate things and control things the way you want them. तो ये कूटनीति की तरह से है, या आपको ये चाहिए, ये भी चाहिए, हर एक चीज को नियंत्रण में लेना चाहते हो. So complicated. बहुत ही जटिल है. Yeah, and when you get that political and that complicated, also maybe your mind and your vision becomes a little bit narrow-minded. तो जब ऐसे जटिल विचारधारा के हो तो आपकी
सोचने की शक्ति, आपका जो विचार, वो भी बहुत संक्षिप्त संकीर्ण हो जाती है आपकी। My way or the highway. ये तो मेरा रास्ता, मेरा ही रास्ता सबसे अच्छा रास्ता है। So, how many of us have ever behaved like Hiranyakashipu? तो हम में से कितने लोग जो हैं अक्सर कई बार हिरण्यकशिपु की तरह व्यवहार करते हैं? Yeah, we have that ability to do that. तो हमारे पास वो योग्यता है करने की। Krishna gives us free will. कृष्णा ने हमको स्वतंत्र इच्छा दी है। We can manipulate the material energy in unlimited ways. हम भौतिक शक्ति को कई तरीके से अपने इस्तेमाल के लिए उपयोग कर सकते हैं। Yeah, so now, interestingly enough, Hiranyakashipu controlled everyone, right? तो ये एक अच्छी ये बात है कि वो हिरण्यकशिपु ने हर एक को नियंत्रित कर लिया था। The demigods were shaking in fear. तो देवतागण भय से कांपते थे। And Prahlad was just, he didn't agree with his father. तो प्रहलाद उनके पिता से बस असहमत थे। But he didn't hate his father. पर वो अपने पिता से घृणा नहीं करते थे। It was his father. He didn't hate him. No, Hiranyakashipu was his father. He didn't hate his father. तो हिरण्यकशिपु उनके पिता थे और वो अपने पिता से घृणा नहीं करते थे। He just didn't agree with him. बस वो उनसे असहमत थे। Now Hiranyakashipu controlled everybody, and he couldn't control the mentality of his son. तो सबको नियंत्रित कर लिया था हिरण्यकशिपु ने, लेकिन अपने बच्चे की मानसिकता को कंट्रोल नहीं कर पाया। Only one little person he couldn't control. एक छोटा सा बच्चा था, उसको ही नियंत्रित नहीं कर पाया बस। And that infuriated him. और वो उसको गुस्सा दिला दिया। Interesting. ये बहुत रुचिकर है। So Hiranyakashipu saw Prahlad as his enemy. और हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को एक शत्रु के रूप में देखा। You're on the side of the Supreme Personality of Godhead. I am the Supreme. आप उधर कहते हो भगवान है, नहीं मैं भगवान हूँ। And in viewing his son as an enemy, he tried to kill him in so many ways. और देखिए अपने पुत्र को शत्रु के रूप में देखते थे और कई तरीके से उनको मारने का प्रयास किया हिरण्यकशिपु ने। Now, interestingly enough, Prahlad, on the other hand, who was being attacked and abused by his father, still did not consider his father as an enemy. और दूसरी तरफ प्रहलाद जिनके ऊपर बार बार अत्याचार किए थे उनके पिता ने, तो वो भी प्रहलाद महाराज तब भी उनको अपने शत्रु के रूप में नहीं देख रहे थे। He could see that his father was a bit bewildered. तो देख सकते थे कि मेरे पिता भ्रमित हो रहे हैं। In the verse after this one, इस श्लोक के अगले श्लोक में he was talking about how many fools were proud. को बोल रहे हैं कि कितने सारे मूर्ख हैं जो पहले गर्वित थे। And he said to his father, enemies are merely imagined by one in ignorance. तो वो उसको बता रहे थे कि आप उसके पिता के जो शत्रु हैं वो खाली उनकी कल्पना मात्र हैं। Now he wasn't really trying to put his father down. वो अपने पिता को नीचा नहीं दिखाना चाह रहे थे। He was trying to give him a little feedback. उनको थोड़ा सा बस एक सुझाव देना चाह रहे थे। Hiranyakashipu could not tolerate it. हिरण्यकशिपु को बर्दाश्त नहीं हुआ। Yes. Interesting. Can you see the big dichotomy in the mentality? आप देख सकते हैं दोनों की मानसिकता के बारे में। So now, let's think. Do we sometimes see enemies outside of us? तो हम कई देखते हैं कि कई बार हमारे शत्रु हमारे बाहर हैं आसपास। And what does this enemy mentality do to our consciousness? और ये जो ये भावना है
शत्रु समझने की दूसरों को, वो कैसे हमारी चेतना को प्रभावित करती है। When we have the enemy mentality, how does that affect us and our relationships? और ये जो हमारे शत्रु देखने की जो भावना है दूसरों को, वो कैसे हमारे संबंधों के ऊपर एक तरह से प्रभावित करती है उसको। Anybody? कोई बता सकते हैं? Enemy mentality, what does it do for us? It disturbs our mind. हमारे मन को व्यथित करता है। Anything else? What else does it do? I'm sorry? Reduced focus, or maybe it might be increased focus on the enemy. तो आप किसी पे फोकस या ध्यान केंद्रित करने का ध्यान कम हो जाता है, तो ऐसा भी हो सकता है कि अब शत्रु के ऊपर पूरा ध्यान आपका शत्रु के ऊपर ही। It may distract us from what we really want to focus on. तो लेकिन वो उससे हमें विचलित कर सकता है जिस पर हम वास्तविक रूप से ध्यान अपना केंद्रित करना चाहते हैं। Go ahead. Anybody else? I want to harm them. I want to destroy them. मैं उनको कष्ट पहुंचाना चाहता हूँ, उनको नष्ट करना चाहता हूँ। Brings out our aggression and our domination. तो ये हमारे जो एक तरह से प्रभुत्व की भावना को ये बढ़ाता है। Interestingly enough, Hiranyakashipu was actually very insecure. तो वास्तविक रूप से देखा जाए तो हिरण्यकशिपु जो हैं आंतरिक रूप से काफी असुरक्षित थे। Needing to control others and have others believe what we believe means there's some insecurity inside of us. There's some insecurity inside of us. Needing to control, manipulate, have people agree with us, it means there's some insecurity inside of us. तो दूसरों को नियंत्रित करना चाहते थे, उनको नियंत्रण में रखना चाहते थे। तो क्यों? क्योंकि अंदर से वो आंतरिक रूप से असुरक्षित थे। On the other hand, दूसरी तरफ Prahlad Maharaj was very secure. प्रहलाद महाराज पूरी तरह सुरक्षित थे आंतरिक रूप से। You're going to try to kill me? Hare Krishna. तो आप मुझे मारना चाहते हो, ठीक है, हरे कृष्णा। He didn't retaliate. प्रतिकार नहीं किया है प्रहलाद महाराज ने, because he was secure in his trust of Krishna. और वो कृष्ण में अपने विश्वास को लेके सुरक्षित थे। Krishna is our real security. कृष्ण हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। And yet, in this world, due to our misidentification with our protective mechanisms, तो इस भौतिक जगत में जो हमारी सुरक्षा की एक संरचना है उसको लेके हमारी पहचान गलत है। we feel insecure. इसलिए हम लोग असुरक्षा का भाव उत्पन्न कर लेते हैं। And then we try to control others. और इस कारण से हम लोग दूसरों को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। There's another interesting point in this verse. Except for the uncontrolled and misguided mind, there is no enemy within this world. तो अनियंत्रित और पथभ्रष्ट मन के अतिरिक्त इस संसार में अन्य कोई शत्रु नहीं है। It doesn't say except for the mind, it says for the uncontrolled and misguided mind. ऐसे नहीं कहते कि मन के बारे में, पर अनियंत्रित और जो पथभ्रष्ट मन उसके बारे में कहते हैं। So, how many of you feel your mind is your enemy? कितने लोगों को लगता है कि मन हमारा शत्रु है, मन मेरा शत्रु है? Wow. How do we treat an enemy? तो हम अपने शत्रु को कैसे उसके साथ बर्ताव करते हैं? How do we treat an enemy? कैसे करेंगे बर्ताव अपने शत्रु के साथ? What do we try to do to an enemy? Ignore is one thing. इग्नोर करेंगे। What's that? Well, usually we don't. तो मित्रता बना लेंगे, बट ऐसा नहीं करना। What do we do when we think somebody's our enemy?
Huh? Oh, I don't know if we do that. Yeah, we avoid, we make a distance, we might also fight. तो हम उनसे दूरी बना के रखें और कई बार हम लड़ते भी उनसे. How many of you have ever argued with your own mind? कितने बार आप लोगों ने अपने मन से ही जो है क्या मतलब बहस की है. Yeah, when we make our mind our enemy, तो जब हम अपने मन को अपना शत्रु बनाते हैं, our mind might react back as an enemy. तो मन भी जो है हमारा दोबारा से वो शत्रु की तरह बर्ताव करता है. So let's look at Haridas Thakur. हरिदास ठाकुर के उदाहरण को देखते हैं हम लोग. Jai Shri Shri Radha Govinda Jai Sitaram Lakshman Hanuman Hare Krishna. Haribol. So when Haridas Thakur was chanting and Maya Devi came with her proposal, तो जब हरिदास ठाकुर जप कर रहे थे, माया देवी अपने प्रस्ताव को लेके आती है. what did Haridas Thakur do? हरिदास ठाकुर ने क्या किया? Huh? No, he didn't actually. I'm sorry? He procrastinated. Not exactly. He said, I'm going to chant. Once I'm done chanting, then I'll come with you. Yes. He acknowledged her. तो सबसे पहले क्या किया उन्होंने उसको स्वीकार किया एक तरह से कि हाँ मतलब उसको प्रस्ताव को उनको बोला कि He said, एक्सेप्ट, हाँ उसको स्वीकार किया. he said, I hear you. तो मैंने आपको सुन लिया ऐसा बोला उन्होंने. Interesting proposal. आपका ये प्रस्ताव है अच्छा है. Interesting doesn't mean good. Interesting doesn't mean bad. It means it's interesting. तो रुचिकर है इसका मतलब ये नहीं कि अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं कि बुरा है. That's a good way to respond to people when you don't necessarily agree with them. ये एक अच्छा तरीका है जिससे आप असहमत हो और उनकी बातों को कैसे आप दोबारा मतलब आप उनको कैसे कह सकते हो. You don't have to make him your enemy. You can just say, well, that's interesting. तो आप उनको ऐसा नहीं कि उनको शत्रु बनाना है, बस आपको बोलना है कि हाँ ये तो रुचिकर है. Never thought of that. So Haridas Thakur said, interesting proposal. Right now I'm chanting. I need to focus on my chanting. You can sit here, and when I'm done, we'll talk about it. तो हरिदास ठाकुर ने बोला कि हाँ ये आपका जो प्रस्ताव है ये रुचिकर है, तो मैं अभी जप कर रहा हूँ, तब तक आप बैठिए, जब तुम जप पूरा कर दो तो मैं आपको फिर मैं आपसे बात करूँगा. He told her to wait. हरिदास ठाकुर ने बोला कि ठीक है आप थोड़ा प्रतीक्षा कीजिए. And he continued with his prayers. और वो अपने जप को लेके दोबारा जप करने लगे. And she ended up becoming his disciple. और वो माया देवी उनके शिष्य के रूप में परिवर्तित हो गई. What if we could do this with our mind? तो हम मन के साथ ऐसे कैसे करें? We were talking about external enemies. However, what do we do when we're living in the same body with something that we think is our enemy? तो ये तो हम कई बार बाहरी शत्रुओं के बारे में बात करते हैं, पर उसका क्या करें जो हमारे शरीर के अंदर ही है, हमारे साथ ही रहता है, वो जो कि हम जिसको हम शत्रु मानते हैं अपना. How is that to live with an enemy 24/7? कैसा है कि 24 घंटे सातों दिन आप एक शत्रु के साथ रह रहे हैं. Frustrating, intense, बहुत ही झुंझलाहट वाला है ये, बहुत disturbing. गुस्सा दिलाने वाला, बहुत ही परेशानी वाला है. So we think our mind is disturbed, but we're disturbed that we have a mind. तो हम सोचते हैं कि मेरा मन परेशान है, बट हम परेशान हैं क्योंकि मेरे पास एक मन है. So Krishna created everything perfectly. कृष्ण ने हर एक चीज पूरी पूर्णता के साथ बनाई है. He gave us a mind to help us, तो उन्होंने मन दिया है हमारी मदद करने के लिए. right? But we don't know how to take the help of the mind. बट हमें पता नहीं है कि मन की सहायता कैसे लें. The mind can be either, the Bhagavad Gita says the mind is either your best friend or your worst enemy. भगवत गीता में कहा है कि आपका मन सबसे अच्छा मित्र भी हो सकता है, सबसे बुरा शत्रु भी हो सकता है. Depending on your interaction with it.
तो ये निर्भर करेगा आप इससे कैसे व्यवहार करते हैं। So the mind is actually really like a computer screen. मन जो है एक कंप्यूटर के स्क्रीन की तरह है। It's not attached, really. तो मन जो है आसक्त नहीं है किसी। However, when the false ego programming runs, those images flash on the mind's screen. तो जैसे मिथ्या अहंकार की एक तरह से प्रोग्रामिंग के द्वारा वो तरह तरह के चित्र आते हैं उस कंप्यूटर के स्क्रीन पे। And when we start fighting and arguing with those false ego images, तो हम लड़ने लगते हैं, उससे बहस करने लगते हैं उस चित्रों से। we can get distracted from our purpose of life. तो हम जो है भटक सकते हैं अपने जीवन के लक्ष्य से। Haridas Thakur didn't fight with Maya Devi. It would have been a distraction from his service. तो हरिदास ठाकुर लड़े नहीं माया देवी से, क्यों? क्योंकि उसकी सेवा में बाधा बन सकती थी। When we fight with our mind, it really is a distraction. It drains our energy. तो जब हम अपने मन से लड़ते हैं तो वो एक तरह से एक भटकना है, वो हमारी शक्ति को खींचता है। So how can we make the mind our friend? कैसे हम अपने मन को अपना मित्र बनाएं? First of all, by acknowledging the mind is just trying to help us. सबसे पहले ये स्वीकार करना कि मन हमारी मदद कर रहा है। And it just is flashing programming from its past experience. वो बस क्या कर रहा है, हमारे जो पुराने अनुभव है उससे नए नए चित्रों को हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है। Our past experience is limited and usually conditional. तो हमारे जो पुराने अनुभव हैं वो बहुत एक तरह से नियमित होते हैं और वो हमारे पुराने संस्कारों के कारण होते हैं। It's based on what we know. और ये निर्भर करता है, ये इस पे आधारित होता है कि हम क्या जानते हैं। Now, in the scope of all knowledge, say this is all knowledge, how much do you think we know? तो जितना भी ज्ञान है तो उसमें से हम क्या कहें कि हम कितना जानते हैं? How much do we know in this big circle of knowledge, all knowledge? How much do we know? कितना सारे ज्ञान में हम कितना है जो हम जानते हैं? How much? How much? Yeah, like a dot. Right. एक पूरे उसमें एक बिंदु की तरह। So we're taking information from one dot of the full range of knowledge, and we're acting in our life based on that one dot of knowledge. तो हम उस एक बिंदु को ला रहे हैं सामने और उस पूरे जो चित्र, उस पूरा जो सर्कल है उस ज्ञान का, उसके ऊपर प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं उससे। So what happens when we keep within that little dot of knowledge? What happens? क्या होगा सिर्फ हम उस बिंदु पे पूरा ध्यान अपना केंद्रित कर दें? It's called samsara. We keep repeating the same things over and over and over again. इसी को संसार कहते हैं, वो पुरानी चीजों को बार बार करते रहना। Sometimes our knowing gets in the way of our growing. तो हमारा कई बार जानना हमारे विकास के सामने हमारी बाधा बन जाता है। Now remember, 5-year-olds are open. They're curious. They want to know what's going on in the world. They're open-minded. तो जहाँ तक कि 5 साल का बालक बिल्कुल एक मासूम होता है और वो खुले दिमाग का होता है और वो जिज्ञासु होता है जानने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए। The demoniac mentality is closed-minded, narrow-minded, my way or the highway. तो लेकिन जो आसुरी मानसिकता है वो समझती है कि बहुत ही संकीर्ण होती है वो और बंद दिमाग के होते हैं और वो कहते हैं कि मेरा रास्ता ही सबसे अच्छा रास्ता है। To make our mind our friend, हमें अपने मन को अगर मित्र बनाना है, we want to be curious. हमें एक तरह से एक उत्सुकता लानी होगी, जिज्ञासा लानी होगी। The mind is trying to help us. It's saying, oh, no, don't do that. Look what happened before. It's just trying to help us. It wants to help us. तो मन हमारा पुराने अनुभव को ला रहा है, तो इसका मतलब हमकी हमारी मदद करने का प्रयास कर रहा है कि अरे ये आपने किया था, ऐसे गलत हो गया था, अरे मत करो।
But just like any program, it can only help us to the degree of the data that it has. तो जिसी तरह इस तरह किसी प्रोग्राम में तो अपने जितना उसके पास डाटा है उसी के अनुसार हमारी वो मदद कर सकता है. But our mind can work with curiosity. बट हमारा मन हमें जिज्ञासाओं के साथ कार्य करता है. If we begin to, instead of being judgmental, being curious, my dear mind. Go ahead. तो अगर हम आप पूरी तरह से अगर उसको हम एक तरह से एक जजमेंटल होने की बजाय हम लोग जिज्ञासा करेंगे तो फिर हम उससे कार्य कर सकते हैं मन के साथ. My dear mind, how can I start to be curious? तो मन से ही पूछो कि मेरे मन, मेरे प्रिय मन, मैं कैसे जिज्ञासु हो सकता हूँ. That's the first step. पहला कदम है. My dear mind, I'm feeling very frustrated right now. What do I need? तो मेरे मन, मैं बड़ा परेशान हूँ अभी, तो मैं क्या करूँ? What's going on inside of me? मेरे अंदर क्या चल रहा है? Instead of blaming others, we start looking at ourselves. तो हम इससे हम अपने अंदर की तरफ देखने लगते हैं. Our mind will look for answers. It will really give us suggestions. It can be creative. तो मन हमें सुझाव देने लगेगा. एक तरह से वो नए ढंग से हमको बताने लगेगा. The mind kind of has two parts to it. The logical cognitive. तो हमारे मन दिमाग के दो हिस्से हैं. एक तो तर्क के साथ चल कार्य करता है. And the creative, imaginative. दूसरा रचना करता है, नई कल्पनाओं को करता है. The mind has the ability to imagine and create new scenarios that it never experienced. मन के पास ही योग्यता है कि आपको एक चित्र बना के दे देगा कि कैसे ये पूरे घटनाओं को लेके. So by asking questions, we activate that imaginative, creative part of our brain, and we can start getting outside of the box of what we know. तो प्रश्न पूछने से अपने मन से हम कि वो मन हमें जो है एक नए कल्पना करेगा, तो आप अपने उस पुराने डब्बे से बाहर आ सकते हैं हम लोग. In this way, our mind can be our friend, it can be our ally. तो इस तरीके से मन जो है हमारा शत्रु हो सकता है और हमारा मित्र भी, मित्र हो सकता है हमारा. How many of you are interested in making your mind your friend? में से कितने लोग अपने मन को अपना मित्र बनाने में जिज्ञासा रखते हैं? Wouldn't life be a little bit more joyful to know you have a friend instead of an enemy living inside of you? तो आपको नहीं लगता आपका जीवन थोड़ा सुखी हो जाएगा कि आपको पता लगेगा कि आपके साथ जो रहने वाला हमेशा 24 घंटे वो शत्रु नहीं बल्कि आपका मित्र बन जाए? We just have to start asking questions. बस हमें क्या करना है? प्रश्नों को पूछना प्रारंभ करना है अपने मन से. My dear mind, I'm feeling very impatient right now. मेरे मन, मैं बहुत ज़्यादा भी अधीर महसूस कर रहा हूँ अपने आप को. What do I need? क्या चाहिए मुझे अभी? And what's one thing I could do that might help me practice being patient? What's one little thing I could do? तो मैं ऐसी एक चीज़ क्या करूँ छोटी सी कि जिससे मेरे को अभी धैर्य बनाने में मेरी उसमें मदद मिले. The mind will come up with a solution. मन हमारा जो है उत्तर को लेके आएगा. Maybe it'll say, well, pause and take a deep breath. मैं बोलेगा कि आप रुको, थोड़ा गहरी सांस लो. When you pause and take a deep breath, you can immediately feel your body calming down and you can relax. You're not so wired. तो जो आप रुकते और गहरी सांस लेते हो तो आपको अनुभव होगा कि मेरा शरीर और मन जो है शांत हो रहा है. Simple little things that it can help us with. तो ये छोटी सी चीज है जो हमारी मदद करती है. The problem is we're looking for the ultimate big quick fix. तो हमारी समस्या है कि हमारा सबसे अंतिम, सबसे बड़ा एक हमारे लिए जो है अंतिम हमारे लिए उत्तर हो. Just give me the answer. बस हमें उत्तर दो, आंसर दो. Just give me the formula.
मुझे उसका सूत्र बताओ कैसे मैं इस पे कार्य करूं। Krishna, you can do it. Just give me patience now. कृष्ण आप कर सकते हो, मुझे धैर्य दो। I'm going to repeat what Prabhupada said. प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? What we learn easily is easy to forget. तो हम जो आसानी से याद करते हैं वो आसानी से हम भूल भी सकते हैं। What is difficult to learn जो मुश्किल है चीज़ों को चीज़ों को याद करना is difficult to forget. और उनको भूलने में भी मुश्किल होती है। So we're learning to shift our perspective. We're learning to shift our consciousness. तो हम जो हैं अपने चेतना को एक जगह से दूसरी जगह पे स्थानांतरित कर रहे हैं अपने। Krishna consciousness is a process. तो कृष्ण भावनामृत जो है एक प्रक्रिया है। It's a process. It takes time. तो ये समय लेता है ये प्रक्रिया। When you work really hard to earn money, to maybe buy something that you want, तो आप बहुत कठिन परिश्रम करते हो किसी चीज़ को खरीदने के लिए। you put in all that hard work, you've invested your time and energy, and then you can get what you want. तो आप अपने समय अपनी शक्ति को लगाते हो और आपको जो चाहिए फिर आप उसको प्राप्त करते हो। How much do you value what you got? कितना आपको अच्छा लगता है उसका आप कितना मूल्य देते हो जो आपको मिला है। You value it. आप उसको बहुत अधिक मूल्य देते हो। We want the precious diamond of Krishna consciousness. हमको वो कीमती हीरा चाहिए कृष्ण भावनामृत का। It's not a cheap price. ये कोई सस्ता सौदा नहीं है। If you want to pay cheap, आपको अगर सस्ता दाम देना है you get the imitation. तो वो उल्टा आपको सस्ती चीजें ही मिलेंगी। If you want the real thing, आपको वास्तविकता चाहिए, वास्तविक वस्तु, you might have to save up over time, save and save and save, little by little by little, and then with all that difficulty that you've gone through, you then can then get what it is that you really want, and you'll value it because it took you all that time to get it. तो अगर आपको वास्तविक चीज चाहिए तो धीरे धीरे करके आपको प्राप्त होता है और आप जो प्राप्त होता है उसका आप महत्व दोगे। I'd like to say one last thing. Everybody knows about investments, right? तो हम में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि निवेश क्या होता है किसी चीज में। Many investments are risky. कई जगह निवेश करना वो खतरनाक होता है। In this life, the best investment is to invest in your own consciousness. इस जीवन में सबसे बड़ा जो आपका निवेश है वो आपकी अपनी खुद की चेतना में है जो होना चाहिए। We can't change anybody, हम किसी और को नहीं बदल सकते, especially if they don't want to be changed. खासतौर से जब वो लोग बदलना ना चाहे तब। We can't make this material world Vaikuntha. हम इस भौतिक जगत को वैकुंठ नहीं बना सकते। It's not. ये है नहीं। It's designed to inspire us through pain to want to get out. तो इस तरीके से इसकी संरचना की गई है कि हमको ये एक तरह से प्रेरित करता है कष्टों के माध्यम से भगवान के धाम जाने में। If we invest our time and energy in trying to change out here, तो अगर अपना समय और अपनी शक्ति व्यय करते यहाँ पे चीज़ों को इधर-उधर परिवर्तित करने में, we're probably going to end up being more frustrated. तो हम जो हैं हमारा भी परिणाम यही हो कि हम अंत में बहुत ज़्यादा झंझलाहट से भर जाएंगे। It took us a while to become very conditioned. तो बहुत समय लगा हमको इस अपनी जो कंडीशनिंग है इसमें आने के इसमें। It's going to take us a while to unravel it all. तो और उतना ही समय लगेगा और इसीलिए बहुत समय भी लगेगा उस अपनी जो पुरानी जो गहरी कंडीशनिंग्स हैं हमारी जो पुरानी जो जटिलता है उनसे बाहर आने में। So the best investment that we can invest in तो ये सबसे बड़ा जो निवेश है जिसमें हम कर सकते हैं is our own consciousness. ये हमारी खुद की चेतना, Not our mind, our consciousness. हमारा मन नहीं हमारी चेतना।
What's going on inside of me? मेरे अंदर चल क्या रहा है? Why do I have these desires? मेरे अंदर ये इच्छाएं क्यों हैं? What do I need? क्या चाहिए मुझे? What one thing could I do to shift my consciousness today? तो मैं एक चीज क्या कर सकता हूँ आज कि मैं अपनी चेतना को वहाँ स्थानांतरित करूँ? Just be curious. बस आप एक जिज्ञासु हो जी इसके लिए। Krishna, help me to see what's the next one step I can take to come closer to you. तो कृष्ण से आप प्रार्थना करें, कृष्ण बताइए एक कदम मैं क्या ले सकता हूँ कि मैं इस चेतना को आपकी तरफ लेके जाऊँ। And when we pray with our heart, फिर हम हृदय से प्रार्थना करते हैं, and we really, really, really want it, हमें वास्तविक रूप से चाहिए, we'll be willing to stay in the process for the long haul. तो उससे हम लंबे समय तक इस कृष्ण भावनामृत में टिके रह सकते हैं। And we'll mine the little gems and jewels that we get every single day, the little realizations. तो हम धीरे धीरे देखेंगे कि मन में से नए एक नए हीरे की तरह कुछ नए साक्षात्कार आ रहे हैं। We'll value the blessings that Krishna is giving us every single day. तो हम उसको महत्व देंगे कि जो आशीर्वाद रूप में कृष्ण हमको साक्षात्कार दे रहे हैं प्रतिदिन। We'll feel gratitude. हम कृतज्ञ होंगे। And as we're grateful for every little blessing, however it comes, even the hard blessings, तो हम वो कृतज्ञ होंगे हर एक उस आशीर्वाद के लिए, चाहे वो कठोर रूप से ही क्यों ना आए हो। as we're grateful, our investment will grow. As we're grateful, our investment will grow. तो जैसे हम जितना कृतज्ञ होंगे उतना ही हमारा जो निवेश है वो बढ़ता जाएगा। And our consciousness will transform. हमारा जो चेतना है वो परिवर्तित होगी। And we'll be able to pray from our heart. और उससे हम अपने हृदय से प्रार्थना कर पाएंगे। So, I see what time it is. Class is over at 9, right? It can be Well- increase will 10 to 15 minutes. So I'm going to, I'm just going to stop there because I think I said enough. I'd like to hear from, the audience, maybe one thing that you gleaned from what I said. I'd like to hear maybe what you got, or if you have any corrections or, questions. But, even if you just want to raise your hand and say, this is what I got from the class, that's also very nice. Please. Should I translate? Okay, go ahead, yes. तो माताजी कह रही है मैं क्लास में जितना बोलना था मैं बोल चुकी, तो बस मुझे अच्छा लगेगा कि आप जो भी बताना चाहे कि आपको क्या एक चीज़ आज के इसमें प्रवचन में अच्छी लगी तो वो आप बता सकते हैं, और कुछ आप प्रश्न पूछ सकते हैं या कुछ सुझाव दे सकते हैं। Please. Said the statement, best investment to invest on consciousness. I'm sorry? Okay. Okay. Best investment is investment in our consciousness. That is Yeah. Yeah, you get short-term benefits and long-term benefits. Oh, how to invest? Be curious, Krishna. How can I invest in transforming my consciousness? तो कैसे हम इस चेतना में अपने आप निवेश कर सकते हैं? तो बस जिज्ञासु हुए कृष्ण से प्रार्थना कीजिए, कृष्ण मैं कैसे अपनी चेतना में उसको और निवेश कर सकता हूँ? That means discerning where is my consciousness right now. तो इसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि मेरी चेतना अभी कहाँ पे है। We always need to assess where we are before we can see where we're going to go. तो कहाँ जाना है उससे पहले ये देखना पड़ेगा कि आप अभी हम हैं कहाँ। If I think I'm in Mumbai, but I'm in Delhi, that might confuse the next step. तो अगर मैं सोच रहा हूँ कि मैं दिल्ली में हूँ लेकिन मैं हूँ मुंबई में, तो मेरे अगले कदम को ये एक भ्रमित करेगा। We need to be honest where we are. तो इसलिए हमें ईमानदार होना पड़ेगा, निष्ठावान होना पड़ेगा अपने प्रति कि मैं हूँ कहाँ पे, किस स्तर पे हूँ। And that honesty can keep us humble because it's like, oh, I'm not in Mumbai, I'm in Delhi, so I have a little further to travel than I thought if I'm going south. तो जब आप अपने स्थिति को अच्छे से पहचानेंगे तो विनम्र बनेंगे कि हाँ अभी मैं इधर हूँ तो मेरे को और कुछ आगे जाना है। And then we can just, okay, accept that. When we accept that, then we can take a step. जब इसको स्वीकार करते तो हम एक कदम आगे ले सकते हैं।
But if we don't accept that and we think, no, I'm in Mumbai, I'm not in Delhi, I'm in Mumbai, how can you take a train in Mumbai if you're in Delhi? अगर आप स्वीकार ही नहीं करेंगे कि भाई मैं दिल्ली में हूँ, मुंबई में नहीं हूँ, आप स्वीकार ही नहीं करेंगे तो आप कैसे मुंबई के लिए ट्रेन पकड़ सकते हैं? And then you're just going to be stuck and frustrated because you can't get on a train in Mumbai because you're not there. तो आप परेशान हो जाएंगे आप कि भाई मेरे को ट्रेन नहीं मिल रही. So where am I? What's my next step, Krishna? तो कहाँ हूँ मैं कृष्णा, मेरा अगला कदम क्या है? The truth will set us free. तो सत्य बोलना हमको जो है मुक्त कर सकता है. Does that help? Thank you. Lady in the back. Thank you. Hare Krishna. हरे कृष्ण माता जी. माता जी, मुझे आज के लेक्चर से ये अच्छा लगा कि हम अपने आप को बदल सकते हैं, दूसरों को नहीं बदल सकते क्योंकि उन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है. We can't change others, we only change in yourself. Yes, that's what you got from the class today? Yes. That's because she said it in Hindi already. It's so frustrating when we try to change others and change the world. That's not our job. That's not why we're here. We're here to transform ourselves to go back, and we get distracted. तो हम लोग यहाँ पे दूसरों को बदलने के लिए नहीं है, बहुत मुश्किल असंभव है दूसरों को बदलना. हम अपने आप को बदलने के लिए ताकि हम यहाँ से बाहर जा सके, अपने धाम जा सकते हैं. Thank you. I'm glad you got that point. Go ahead. Hare Krishna Mataji, Dada Pranam Mataji. Thank you Mataji for wonderful words. Mataji, we have heard so many lectures, we have attended so many seminars, but the focus attention, what to do that we can't deviate from attention. We got deviate from a goal of life. That is Krishna Prema. How we can get it that so many times we are just deviating. There are so many distractions in this world. Yes. We can't control ourselves. It's not under control. So what is the best thing we can do that we may get the Krishna Prema at the end of life at least? Go ahead. Hindi. For everybody. माता जी थैंक यू सो मच, आपने अच्छा बताया, आपका बहुत धन्यवाद. माता जी जैसे आपने बताया कि अभी हमारा जो मेन गोल है कृष्ण प्रेम है, वो उससे बहुत डेविएट हो जाते हैं, उससे भटक जाते हैं बहुत जल्दी. तो उससे कैसे मतलब हम क्या करें? हमने बहुत सारे सेमिनार अटेंड कर लिए हैं, बहुत सारे लेक्चर अटेंड कर लिए हमने, बहुत सारे मतलब 17 साल से भक्ति करते आ रहे हैं, बट जो मेन फिर भी कहीं ना कहीं भटक जाते हैं. उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? बेस्ट थिंग क्या है उसके लिए? So, say your question in English again because I'm not sure I got exactly what you're asking. Is it a question or is it a statement? It's a question, Mataji. Okay, so ask it one more time in English. What is the best thing we can do so that we may not deviate from our goal, which is Krishna Prema, at the end of life? The first thing in my understanding of trying to just do the automatic formula for 27 years, in my understanding, we need to understand our machinery. We need to understand the field of activities. This is our field of activities. We're in this body. We need to understand it. सबसे पहली चीज़ क्या करनी पड़ेगी कि हम पथ भ्रमित ना हो अपने जीवन के लक्ष्य से. सबसे पहले इस मशीनरी जो हमारी जो ये मशीन है, यंत्र है हमारा शरीर, इसको समझना पड़ेगा. If you have a cell phone or a computer and you don't understand the programming, you can't really utilize it. तो जब आपके पास कोई सेल फोन है या कंप्यूटर है, लेकिन आपको पता नहीं इसको कैसे प्रयोग करना है, तो आप उसका सही उपयोग सही उसका फायदा नहीं उठा सकते. We spend a lot of time and energy resisting our body. I hate my body, neglecting our body. तो बहुत सारा समय व्यतीत करते हैं अपने शरीर से घृणा करने में कि हमें कोई ऐसा अच्छा नहीं लगता, ऐसे ही अच्छा नहीं लगता. We spend a lot of time beating our mind. तो हम बहुत समय बिता देते हैं अपने मन को ही प्रताड़ित करने. Takes a lot of energy and it hurts. और बहुत सारी शक्ति लेता है और हमको कष्ट भी देता है.
So understanding our machinery really helps us to understand our programming. तो इस यंत्र को समझने से हमें बहुत मदद मिलती है कि हम अपने कैसे संरचना क्या है हमारी उसको हम समझ सकें. And then we can learn to manage and utilize what we have. तो हम इसको सही तरीके से इसको व्यवस्थित कर सकते हैं कि कैसे इसको इस्तेमाल कर रहे हैं. I write about this in these the blue and the blue and the orange book. I just only have like 4 sets. No, the other blue book and the blue one. This is called Finding the Gap and Entering the Gap. No, the other blue one. Entering the Gap. Thanks. This is about the mind and the false ego. You can see the 2 birds. Here's Krishna and here's the jiva. And the jiva is on autopilot. Mostly we're on autopilot. तो ये एक जीव है, इसमें कृष्ण है, नीले रंग के जो कृष्ण है, बाकी जीव है. तो जीव जो है स्वचालित यंत्र में है जिसमें ड्राइवर नहीं होता, वो अब ऑटोपायलट मोड में है. So Krishna gave us an autopilot mode because otherwise we wouldn't be able to survive. तो कृष्ण ने ये ऐसी स्थिति दी है हमको ऑटोपायलट मोड की, क्योंकि इस बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते. मतलब Because we don't know who we are. क्योंकि हमें पता ही नहीं हम कौन है. The problem comes when we think our autopilot mode is who I am. तो समस्या तब आती है जब ये जो ऑटोपायलट मोड है उसी को सोचता है कि हाँ ये मैं ही हूँ. So understanding our autopilot mode and discerning the difference between that and my soul, then the soul can manage the machinery instead of the machinery controlling us. तो जब ये समझेगा कि समझ में आया कि हम ये ऑटोपायलट मोड से अलग हैं, ये शरीर नहीं है हम, तो फिर हम इसमें भेद पता कर सकते हैं. And this book is about the anarthas, which I call habits. तो ये जो दूसरी पुस्तक है ये अनर्थों के बारे में, जिसको हम क्या कहते हैं, आदत. So I think I have only 4 copies of this set left, and there's a special deal if you get, the books. And I have another book. Can I have the black and white book? Yeah. And this book here is about friends and enemies. You see the black and the white? तो ये बुक जो है मित्र और शत्रु के लिए इसमें. When I became a devotee, I was very fanatical. तो जब मैं भक्त बनी तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक रूढ़िवादी थी. And my parents were karmis. मेरे जो माता पिता हैं वो कर्मी हैं. I don't use that word anymore. मैं वो शब्द दोबारा अब और नहीं प्रयोग में नहीं लाती. So I saw them kind of as my enemy. तो उनको मैंने अपने शत्रु के रूप में देखा. And that hurt them. और इससे उनको कष्ट भी हुआ. And they saw the movement as their enemy. तो उसके कारण उन्होंने पूरे इस आंदोलन को अपने शत्रु के रूप में देखा. So they kidnapped me. They did, really, for real life. I'm not kidding you, and it was serious. तो उन्होंने मेरे परिवार वालों ने मेरा अपहरण कर लिया. And had me brainwashed. तो उन्होंने मेरा पूरी तरह से मेरे मस्तिष्क की धुलाई करने का प्रयास किया. And this is the story of friends and enemies and how in the end it became resolved and there was forgiveness and understanding. This is a true story. This is my story and my mother's story. It's a partial memoir. तो इसमें पूरा पता है कि कैसे फिर उसके आगे हमने चीज़ों को संभाला और इसमें मेरे जीवन की अपने जीवन की कहानी माताजी बता रही हैं. It also tells the story of how I became a devotee. इसमें भी है कि कैसे भक्त बनी माताजी. And this book is about compassion. ये जो है पुस्तक करुणा के बारे में बताती है. It teaches us, how to understand our machinery a little bit, just through the language of feelings and needs. तो इससे पता लगता है कि हम अपने मशीनरी को अपने इस यंत्र को कैसे अच्छे से जान सकते हैं अपने भावनाओं के द्वारा. So I'm giving some special discounts. If you buy these 3 books for $1,200, you get this one free. तो ये डिस्काउंट माताजी की तरफ से है विशेष. 3 पुस्तक अगर होगी तो 1200 मिलेंगे और चौथी उसके साथ फ्री मिलेगी. I only have, I think, 5 sets left. तो 5 सेट बचे हैं माताजी के पास. And online, these 2 books are 800 rupees. तो ये 2 बुक पुस्तक 800 रुपए की हैं. But I'm giving these 2 books for 600 rupees. ये फिर मैं 600 रुपए की दूंगा. And this will be my last book tour. I'm not doing a book tour anymore. It's not my favorite thing to do.
तो ये मेरा अंतिम जो है बुक टूर कह सकते हैं जिसको पुस्तकों को देना, तो क्योंकि माता जी को अच्छा नहीं लगता है. But I do like to share information, and I put all my mistakes, my fanaticism, my impersonalism, my autopilot, my uncompassionate nature, I put all my mistakes in these books. So you don't have to make the same ones. तो माता जी कह रहे हैं कि मैंने अपने जीवन में जितनी भी गलतियां की सब इन पुस्तकों में डाल दी ताकि उन गलतियों को दोबारा आपको ना करना पड़े. It's 9:15 and I know you all have busy schedules. It's Sunday, but still I'm sure you all have many things to do. We could talk more about this. I'll be available after the class here. First of all, for the books, and then if people have questions, you know, we can maybe, I can maybe answer some questions. But I really want to acknowledge, you want to say that part first? I missed that. Okay. It's 9:15 and I want to honor that they're busy schedules and they need to maybe go. No, they can have some questions if you allow. Well, how many people have to go immediately? कितने लोगों को अभी तुरंत यहाँ से जाना है? No one wants to go. Okay. Then we can have some more questions. तो Please. कुछ और प्रश्न हम लोग ले सकते हैं. One there and then one over here. Hare Krishna Mataji, thank you for your wonderful lecture. Like we are so fortunate to hear from you that we can't hear from Srila Prabhupada live, but we can hear from you that we are so fortunate. Mataji, my question is that I consider like one or two person in my life like my enemies, like they harm me for some reasons. So how to get out of that to consider them like my enemies? Also, I think sometimes in my when I am alone, when I'll get some money or some anything like power, then I must take revenge from that person. Okay. Yes, revenge. Go ahead, yes. Go ahead. Hare Krishna Mataji. Don't say the beginning part, just say the question. माताजी मेरा प्रश्न ये है आपसे कि मैं अपने जीवन में कुछ एक दो चुनिंदे लोगों को अपना शत्रु मानता हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे साथ कुछ गलत किया है. तो ये जो मेरी मानसिकता है उसे मैं कैसे बाहर आ सकता हूँ या उनको अपना शत्रु ना मानूं. लेकिन कभी कभी मैं अकेले रहता हूँ तो ये भी सोचता हूँ कि अगर कभी मेरे पास कुछ पैसा है या पावर है तो मैं उनसे बदला जरूर लूँगा उसके लिए. Thank you. Good question. अच्छा प्रश्न है. When people harm us and hurt us, you know, we may not want to be close to them. तो जो कुछ लोग जो हमें कष्ट पहुंचाते हैं, पीड़ा देते हैं, हम उनके ज़्यादा नज़दीक नहीं जाना चाहते. When people abuse us, it simply means they're in ignorance. तो जो लोग हमें कुछ लोग जो प्रताड़ित करते हैं, इसका सीधा सा मतलब है कि वो अज्ञानता में. People do what they do because that's all they know how to do. वो जो लोग करते हैं ऐसा किस लिए करते हैं क्योंकि बस उनको यही पता है कि ये करना है. And there are many people who are in ignorance. बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो अज्ञानता में. And they're hurting, and so they hurt others. तो क्यों They're hurting inside, and so they hurt others because they're hurting. They share their pain with others. They throw it on others. तो वो खुद को कष्ट पहुंचा रहे हैं जिससे वो दूसरों को भी कष्ट पहुंचा रहे हैं. तो उनके अंदर खुद जो पीड़ा है वो दूसरों के ऊपर उड़ेलना चाहते हैं. Now you retaliating and somehow taking revenge and hurting that person back, what's that going to give for you?
तो आप उसका जो प्रतिकार करते हैं, जो कष्ट उसने दिया आपको भी, आप भी उसको दोबारा देते, तो उसका क्या परिणाम होगा? You want justice? आपको न्याय चाहिए? What do you want? Like Mataji, I'll satisfy my heart. Satisfy your Heart. heart. You want justice. You want some justice. You want to make it fair. You hurt me, I'm going to hurt you back. Something Like internally, I think that if I take revenge, it's equal to. That would be nice if that would work. तो ये अच्छा होगा अगर ये कार्य करेगा कि आप अगर बदला लेते हैं तो हिसाब बराबर कर लेते हैं अपना। तो Now let's think about it. Just think about it. इसके बारे में सोचिए थोड़ा। You take revenge on this person. Do you think they're going to say, "Oh yeah, now we're all square. It all works out"? जरा सोचिए, थोड़ा गहराई से सोचिए, आपने बदला ले लिया उससे अपना, तो फिर क्या होगा? ठीक है, सब बराबर हो गया, आप बराबर हो गया। How do you think they're going to respond to that? तो कैसे आप इसको बताइए, कैसे इसके बारे में Remember, they're in ignorance. याद रखिए कि वो अज्ञानता में है। Maybe he again want to take. Yes, probably. That's probably what's going to happen. तो यही एक जो परेशानी है कि वो दोबारा प्रतिकार करेगा आपका। That's samsara. इसी को संसार कहते हैं। You hurt me, I'm going to hurt you. I'm going to hurt you back. 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 And we stay in this material world forever. यही होता है, इसी को संसार कहते हैं कि मैं, तुम मुझे कष्ट पहुंचाओ, मैं तुम्हें कष्ट पहुंचाऊंगा, तुम मुझे कष्ट पहुंचाओ, मैं तुम्हें कष्ट पहुंचाऊंगा, और यही हम करोड़ों करोड़ों जीवन से हम लोग कर रहे हैं। At the same time, you're hurting inside. उसी समय साथ के साथ आप अपने आप को भी कष्ट पहुंचा रहे हैं। There's a lot of pain in there. और अंदर आपको कष्ट भी हो रहा है। Whatever they did to you, that wasn't fair. उन्होंने जो आपके साथ किया वो गलत था। That really hurt you. ये आपको कष्ट पहुंचा रहा है। Get some healing on your pain. तो आप उस कष्ट के ऊपर थोड़ा मरहम लगाइए। Talk to somebody who's trained and professional and can help you to work through that pain. तो आप उससे, किस व्यक्ति से बात करिए, किसी से जो आपको कष्टों को समझ सकता है। Shine a light on your pain. Bring light and healing to your pain. तो थोड़ा प्रकाश डालिए अपने जो आप कष्ट महसूस कर रहे हैं, और थोड़ा उनको ठीक करने का प्रयास कीजिए। So you don't keep yourself trapped. तो आप उसमें फंसेंगे नहीं। You deserve to be healed. आपको चाहिए, आप इसके लिए इसके पात्र हैं कि आपके कष्ट दूर हो। You deserve to feel cared for and loved. तो आप इसके योग्य हैं कि आपको कोई प्रेम दे और आपको कष्टों को दूर करे। And for whatever reason, that person in ignorance has no clue how to do that. तो और जो व्यक्ति, वो जो सामने वाला व्यक्ति जो अज्ञान में है, उसको नहीं पता ये कार्य कैसे करना है। Justice is Krishna's job. तो न्याय दिलाना किसी को कृष्ण का कार्य है। And he'll teach everybody their lessons one way or another. तो कृष्ण सबको शिक्षा देते हैं, आपने एक तरीके से नहीं तो दूसरे तरीके से। If I think I need to teach you a lesson, अगर मुझे लगता है कि मैं आपको शिक्षा देना चाहता हूँ, I'm being distracted from investing in my own healing. तो मैं जो है उससे भटक रहा हूँ कि अपने आप को ठीक करने के बजाय, And I'm probably just going to create more pain. और उससे हो सकता है कि मैं और ज्यादा कष्टों को बढ़ावा दूं अपने। Does that make sense? तो ये आपको समझ में आया? Yes, Mata. Thank you, Mata. Thank you. You deserve to be healed, and when people abuse us, that's unacceptable. तो ये आपको चाहिए कि आप इसके योग्य हो कि भाई आपको दर्द है, वो कष्ट से छुटकारा मिले। But we don't want to continue the pattern. We don't want to continue the action and reaction. तो ये जो है जो कार्य प्रतिकार है, इसको इस प्रणाली को तोड़ना है हमको। Your mind might tell you that will give you satisfaction, however. तो मन आपका बोल सकता है कि इससे आपको संतुष्टि मिलेगी। Thank you for that very valid and very important question, because we have these feelings inside. We hurt so much when someone hurts us. It's naturally like we just want to, hit back. There are other ways to heal. तो बहुत ही धन्यवाद, बहुत ही व्यवहारिक प्रश्न है कि कोई हम लोगों को कष्ट देता है तो कैसे उससे
आगे बढ़ें उस चीज़ से। Thank you for being vulnerable in front of everybody. Thank you. Hare तो Krishna. आपको धन्यवाद इस प्रश्न के लिए। हरे कृष्णा माता जी। Okay, Hare we've got, Krishna. we've got a, oh, there you are, okay. हरे कृष्णा I'm माता जी। looking, okay. माता जी, I have doubt in this answer. प्रभु जी, can I speak in हिंदी? प्रभु जी, Go ahead. You have a doubt, go ahead. इसके अंदर ये डाउट है माता जी कि जैसे कि मेरे को ऐसे बताया गया है कि अगर हमें कोई हार्म करता है तो ये मेरे कार्मिक रिएक्शन है, लेकिन इसके अंदर एक प्रोस्पेक्टिव है कि ऐसा भी तो हो सकता है अगर मैं कल से ठानूं कि मैं इसको कल से परेशान करूंगा, तो क्या उसका वो कार्मिक रिएक्शन है? So English. Okay. So I will translate in English. Okay. So Prabhuji is saying that I have a doubt in his, whatever you have answered, that if someone gives me pain, and if I think that this is my karmic reaction, so next day I decide that I will give him more pain, so that he will be his karmic, if he is facing his karmic reaction, so will not that be good? You want to be careful about getting involved in karmic reactions. तो आपको इसमें सावधान रहना पड़ेगा कि आप कर्मों की जटिलता में। And also, I tend to not see what comes to me as a karmic reaction. I tend to see what comes to me as Krishna wanting to teach me something. तो ये आपको ऐसे नहीं देखना होगा कि मेरे कर्मों का फल है, इसको ऐसे देखना पड़ेगा कि आप कि कृष्ण मुझे इससे क्या शिक्षा दे रहे हैं। I don't see karma as punishment. मैं कर्म को एक दंड के रूप में नहीं देखता हूँ, I see karma as feedback. और इस कर्म को मैं एक सुझाव के रूप में देखता हूँ। Krishna may show us something like, we may be treated really violently. तो कृष्ण में दिखाते हैं कि हमें हो सकता है कई बार हमें बहुत आक्रोश के साथ हमारे साथ व्यवहार हो कई बार। And we may learn, I never want to do that to anybody. तो हमें सीख सकते हैं कि मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा किसी के साथ। So we got some feedback there. तो इससे हमें कुछ सुझाव मिला उस। Now, if we want to start to get involved in I should be giving another person a karmic reaction, we are now involving ourselves in more karma. तो अगर मैं ये सोचता हूँ कि मैं उसको और का उसके कर्मों का जो कर्म की प्रतिक्रिया में डालूंगा, तो इसका मतलब मैं अपने आप को और अपने कर्मों में डाल रहा हूँ। That doesn't mean we should allow people to hurt us. तो इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरे लोगों को स्वीकृति दें कि आप मुझे कष्ट पहुंचाइए। We can move away or move out of relationships that are abusive. तो हम उससे हट सकते हैं, उससे दूर जा सकते हैं उस संबंधों से जो बहुत ही ज़्यादा जो हमें प्रताड़ित करने वाले हों। And take care of ourselves and protect ourselves and heal ourselves. हमारे उससे हमें अपने आप को अपने आप की देखभाल कर सकते हैं, अपने आप को ठीक कर सकते हैं। But once we think I need to be involved in the karmic reaction, it's going to come back to me again. तो अगर हम सोचते हैं कि मैं इससे और इसको उसमें कर्म में फंसूंगा, तो इससे उल्टा हमको और ज़्यादा इसको दंड मिलेगा। Krishna, help me to learn to grow from this situation. कृष्ण मेरी सहायता कीजिए कि कैसे मैं इससे बाहर निकल सकता हूँ। Not to become involved in more karmic reaction. तो ना कि मैं बहुत ज़्यादा फंसूं इसमें। Did I clear the doubt? Okay. I think we have room for, did you have a question? 1, 2, and 3. Okay. Hare Krishna. How long are we going to stay? I don't mind. I can stay till 10 o'clock, but I don't want to interfere with you. So 1, 2, 3. Hare Krishna, Mataji. Hare Thank you very much for your wonderful class. Mataji, often we see that these dialogues, what you have discussed, we are discussing, these are very internal and we can't see these dialogues. These are very challenging also to talk to your mind and to have these deep conversations with it. So we see is ki we often skip these conversations. Yes, we do. We try to be more extrovert than introvert internals. So we try to control people rather than our mind. It's very easy to control others than our mind. We try to control others in our mind. Other people rather than our mind. Oh, okay, ourselves. right, okay. So it is easy way. So
I have 2-3 questions, but I will try to summarize it. Like within ISKCON also, when we are in some positions or when we try to be guide someone, then how to guide them very sensibly or very responsibly. Either we are also being victim of our these things. Okay, so let me take one question at a time. So just don't do the preliminary part. Just say the question in Hindi and I'll answer it. Okay. Yeah. तो यद्यपि हम साधारणतः देखते हैं कि ये सारे टॉपिक्स जो है बहुत ही डीप हैं और हम साधारणतः इसको इन टॉपिक से बचने का प्रयास भी करते हैं, क्योंकि मन से बातचीत करना बहुत ही जटिल विषय हो सकता है। तो और इसीलिए हम इस प्रयास करते हैं कि हम बाह्य रूप से लोगों को कंट्रोल करने का प्रयास करें rather than अपने अंतःकरण को कंट्रोल करने का प्रयास करें। तो ये मेरा कुछ क्वेश्चन थे, तो उसमें से पहला क्वेश्चन ये था कि हम जब ISKCON में भी रहते हैं तो हम जब किसी भक्तों के साथ समूह में रहते हैं तो दूसरे भक्तों को गाइड करते हैं, तो किस प्रकार से हम जब अपने ही अंतःकरण से जूझ रहे हो तो दूसरों को सही प्रकार से गाइड कर सकते हैं? Yes. Be curious. आप जिज्ञासु बनिए। They say that the worst vice is advice. तो सबसे बड़ा जो वर्स्ट वाइस यानी सबसे बड़ा पाप है वो दूसरों को एडवाइस देना। We don't really know necessarily what's going on for another person. We don't know necessarily what's going on inside of another person. तो हमें पता नहीं है कि भाई दूसरे व्यक्ति के अंदर क्या चल रहा है, सामने वाले व्यक्ति के अंदर। We don't know their past, we don't know their traumas. तो हमें पता नहीं उसका अतीत कैसा है, वो किस किस अनुभवों से होकर गुजरा है। We can ask them questions which stimulate their thought processes. हम कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं जो उनकी सोचने की प्रक्रिया है उसको संचारित करे। When he asked me about retaliation, I said, well, what do you think that's going to cause? तो जब इन्होंने मुझसे पूछा कैसे प्रतिकार करूं, तो उसका कारण माताजी ने पूछा। So he could think ahead and kind of see it ahead of time. तो ये देख सकते थे। So asking questions, helping people to think and introspect is healthy. तो प्रश्न पूछना उनसे ये एक अच्छा एक व्यवहार है। Also allowing people just to reveal their mind, and sometimes just in them speaking it, they start to understand themselves better. तो कई बार जब हम किसी को बोलते हैं कि आप अपना हृदय खोलिए, तो धीरे उस प्रक्रिया में अपने आप को समझने लगते हैं। When you receive what they say without judgment, तो आप उस चीज को ग्रहण करते बिना कोई पूर्व टीका टिप्पणी के, that helps a person to process all the stuff that's going on inside. तो उससे उसको मदद मिलती है उससे समझने में कि मेरे अंदर क्या क्या चल रहा है। And if you are a counselor, I really suggest that people take the Karuna Care courses that teach how to listen. तो इसलिए आप मैं एक सुझाव दूंगी, जो हमारा जो करुणा केयर एक कोर्स है जो उसको माताजी संचालित करते हैं, उसको आप कर सकते हैं। उससे पता लगे कि कैसे लोगों के हृदय की बात खुलवा सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं। It's a skill that really can help our interactions and our support. तो ये एक कला है जिसके द्वारा आप इस बातचीत से पता कर सकते हैं कि सामने वाले के हृदय में क्या चल रहा है। Is that okay? You have 2 more questions, right? Just one more. Okay, 1 more, and then 1, 2, and then 3. So, as It's on. So we often remember how people made us feel, Yes. rather than what they do to us. Yes, yes. So as it is famous also so how to be emotionally balanced in these circumstances? Like often if we are feeling angry, then all these logics take the back seat, rather this overcome by these feelings. So how to be remain equipoised in these circumstances? So हम देखते हैं कि हम ज़्यादातर जो है कैसा लोग हमको Thank you for coming. कैसे हमारे को लोग महसूस करवाते हैं, वो हमको ज़्यादा लंबा याद रहते हैं
ना कि क्या कुछ लोगों ने हमारे लिए किया वो ज़्यादा याद रहता है। तो किस प्रकार से हम इन चुनौतीपूर्ण जो हमारी फीलिंग्स है उनको किस प्रकार से इक्विपोइज रह सकते हैं, सामान वो रह सकते हैं, समानता बनाए रख सकते हैं इन चैलेंजेस में। It's important to name our feelings. तो ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि आपने भावनाओं को नाम दो। The subtle body, the mind, all of that's so invisible. तो हमारा सूक्ष्म शरीर, हमारा मन, ये अव्यक्त है, दिखाई नहीं देता। How do you work with something that's invisible? अब कैसे कार्य करोगे उससे जो कोई दिखता ही नहीं है? You want to make it visible. तो आपको उसको देखना पड़ेगा। You name the feelings. Just name them. उस भावनाओं को आप नाम दो। Just by naming, like, I'm feeling angry. तो आप उसको बोल सकते हो, मैं गुस्सा, क्रोधित अनुभव कर रहा हूँ। Is different than इससे अलग है कि आप सीधा व्यवहार में लाते हो उसको। It's a different experience for the person over there and for us. दोनों अलग-अलग अनुभव होगा दोनों को। And then we can find out, what do I need? Why am I angry? What do I need? This book helps with that. तो फिर आप इस पुस्तक से आप सहायता ले सकते हो समझने में कि अभी क्या करूं, अब मेरे को गुस्सा आ रहा है। तो As far as introspection goes, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur himself said, when you see faults in others, introspect. Find what's going on inside of you. He said that. There's a quote. Yes. तो भक्ति सरस्वती महाराज बोलते थे, आप जब सामने वाले में कोई दोष देखते हो तो आप आत्मनिरीक्षण करके देखो कि वो दोष कैसे मेरे अंदर है। Invest here. It's best investment. It's really the only thing that we got, and this is the only one that we're responsible for. It's worth it in the short run and in the long run. तो आप इसमें अपनी आंतरिक उसमें चेतना में निवेश कीजिए। ये छोटी अवधि के लिए, बड़ी अवधि के लिए लाभदायक है। Thank you. Hare Krishna. I think you had a question and then you, and then a woman in the back, and then maybe we might want to end. Mataji, my question was same as the second Oh, question. same as his. We got it. Okay, there's one in the back there. Oh, you have a question too. Yeah. Okay. I have a question. We talk often about Man, Buddhi and Ahankar. Say again. Man, Buddhi and Ahankar. Okay. Mind, intelligence and Okay. false ego. Yes, It's yes. a conjecturation process. So what is the relation to transform ourselves for all these three functions? That is not a short answer. If I could give it in a short answer, I would. You want to say the question? So प्रश्न है कि मन, बुद्धि, अहंकार, मिथ्या अहंकार, तीन चीज़ों के बारे में सुनते हैं। तो ये कैसे संबंधित है और कैसे क्या हम प्रक्रिया करें कि इन तीनों को हम एक तरह से परिवर्तित कर सकते हैं इसकी कार्यप्रणाली को? Again, we want to understand our own machinery. We each have a different model. तो हमें पहले अपनी मशीनरी को, हमारे जो यंत्र है, इसको समझना पड़ेगा। हमारे पास अलग-अलग यंत्र में हैं हम लोग। So these two books kind of helped you to sort through it a little bit. ये दो पुस्तकों से मदद मिलेगी आप। Like my model is very a planning model. तो जैसे मेरा जो ये यंत्र कैसे कार्य करता है, बहुत योजनाएं बनाता है। Planning, likes to plan. योजनाएं बनाता है। So I acknowledge that I like to plan. तो ये मैं इसको स्वीकार करती हूँ कि हाँ भाई मेरे को अच्छा लगता है प्लानिंग बनाना। And I allow myself to make a plan. तो मैं अपने आप को स्वीकृति देती हूँ कि मैं प्लानिंग कर सकूँ, प्लान बना सकूँ। And then I say, okay, Krishna, what's your plan for the day? तो ठीक है, फिर मैं कृष्ण से पूछता हूँ, कृष्ण ये तो ठीक है लेकिन आपका प्लान क्या है आज के लिए? So I satisfy my mind. तो मैं अपने मन को संतुष्ट कर देती हूँ। And I satisfy my soul and my relationship with Krishna. तो ऐसे मैं कृष्ण के साथ अपने संबंध को, अपनी आत्मा को भी संतुष्ट कर देती हूँ। That's how I can pacify my mind, and at the same time, relate to Krishna. तो इस तरह से अपने मन को भी सांत्वना देती हूँ और कृष्ण से भी संबंध जोड़ सकते हैं। We want to know our machinery. तो सबसे पहले जरूरी है कि अपने इस यंत्र को समझने का प्रयास करें। These two books can help with that. तो ये दो पुस्तक आपकी मदद करेंगे। Thank you. Hare Krishna. There's one in the back, and then this one woman over here. Hare Krishna Mataji. Hare Bol. Thank you Mataji for all your powerful lecture.
you rightly said that mind is our friend and enemy both, and that is what Krishna also says in Bhagavad Gita. He says not both, he says it's either, Yeah, either or. right. Can be used as a friend and enemy both. You also said that to make the mind as our friend, we need to ask questions and curiosity with the mind. The problem is that most of the time we don't understand the difference between ourself and the mind, and we not able to understand that we need to actually ask some question to ourselves, which is introspect. So my question is how to understand deal with that kind of situation, and how to ask the right question with the right curiosity with the mind. You want to translate that? You want to say that in Hindi? Yeah. थैंक यू माता जी, आपने बहुत पावरफुल लेक्चर के लिए आपने बताया कि जो माइंड है वो या तो हमारा मित्र है या दुश्मन है, एंड वही भगवद गीता भी बोलती है. आपने बताया कि माइंड को अपने मित्र के रूप में प्रयोग करने के लिए हमें सही प्रश्न करना चाहिए, सही जिज्ञासा करनी चाहिए. मेरा प्रश्न ये है कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग ये नहीं समझ पाते कि हम में और अपने मन में कोई अंतर है, हम लोग दोनों को एक ही समझते हैं. तो हम किस तरह से उसको अलग अलग समझें और सही प्रश्न सही जिज्ञासा के साथ अपने मन से कर पाएँ कि उसको कंट्रोल कर पाएँ. So your question again is how do we distinguish between our mind and ourself? तो आपका प्रश्न यही है कि मन में और अपने में कैसे हम भेद पता करें. Yes, and how to ask the right question with the curiosity. That was it, yeah. So I have a tendency not to believe in right and wrong. This is me. Right and wrong are part of the world of duality. तो मेरी प्रवृत्ति है कि मैं सही और गलत में ज़्यादा विश्वास नहीं रखती. क्यों? क्योंकि ये सही और गलत जो है ये द्वंद्वमय संसार का एक हिस्सा है. If I'm right, you must be wrong. तो मैं सही हूँ तो आप गलत होंगे. Tends to divide us. तो ये जो है हमको अलग करता है. I like to use the word appropriate. तो मैं इस शब्द का इस्तेमाल करती हूँ appropriate, यानी कि ठीक ठाक. Now, when we're getting into the creative part of the mind, there is no right or wrong question to ask. तो अगर मन में जाएंगे जहाँ पे रचना मन का जो एक हिस्सा है मस्तिष्क का जिसमें रचनाएं होती हैं, कल्पनाएं होती हैं, तो इसमें ऐसा कोई सही गलत नहीं है. You start with any question. किसी भी प्रश्न से शुरुआत कर सकते हो. And as you practice asking questions, you will become more attuned to maybe what would be the next appropriate question. तो फिर आप इसी तरह से आप इसके लिए तैयार हो जाओगे कि भाई अगला प्रश्न क्या होगा. You're learning how to exercise your creative muscles. तो आपको बहुत ज़्यादा मस्तिष्क के उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी मांसपेशियों की. And each person is individual. और हर एक व्यक्ति अपने आप में एक अलग है. So there's no right or wrong. You just start asking questions. If the question didn't help you, then ask a different question. तो आप फिर प्रश्न पूछिए. वो क्वेश्चन आपका मदद नहीं करता तो दूसरा प्रश्न पूछिए. And you can always pray, Krishna, what question would be appropriate? कौन सा प्रश्न जो उचित होगा? कृष्ण से प्रार्थना की. Krishna's there to help us. तो कृष्णा निश्चित रूप से हमारी सहायता करें. He's real. कृष्ण वास्तविकता है. He's alive. कृष्ण जीवित है. Start talking to Krishna in the heart. तो कृष्ण से हृदय में बात करना प्रारंभ कीजिए. Was that helpful for you, Prabhu? Thank you. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. My good karma just finishes and then bad karma prarabdha starts. Someone tells me that your prarabdha, this is your destiny. So I am so entitled that I feel, okay, this is my destiny. Maybe I should punish myself more. I have done even, I deserve even more like that. I become resentful and self-harming. Okay. So what is the solution? So again, just like I don't really believe in right or wrong,
I don't necessarily believe in good or bad. तो जिस तरीके से मैं सही और गलत में ज़्यादा विश्वास नहीं रखते, तो अच्छे और बुरे में मैं विश्वास नहीं रखते. We're all trying the best with whatever machinery, whatever intelligence we have. We're doing our best. तो हम सबसे अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं. जो भी हमारे पास जो यंत्र है, जो मन है, जो भी हमारे पास उपकरण है, उससे अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं. And to say, oh, I have such bad karma, तो अब ये कहना कि मेरे पास ये कितने बुरे कर्म हैं मेरे, we might be missing some lesson. तो इससे हम कुछ जो शिक्षाएं हमको मिलने वाली उससे हम चूक सकते हैं. So Krishna's always trying to teach us something. He wants us to come back more than we want to come back. कृष्ण हमेशा हमको कोई ना कोई शिक्षा देना चाहता है. क्यों? क्योंकि कृष्ण हमसे ज्यादा उत्सुक है हमको अपने पास बुलाने के लिए. So something that we think is bad might actually be really beneficial for our spiritual life. तो हम जो सोचते हैं कि भाई ये बहुत बुरा है, तो हो सकता है कि वो हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक हो. I'll give you a little example. तो छोटा सा एक उदाहरण देती हूँ. I used to be really angry at Krishna for being in a woman's body. तो मैं पहले बहुत गुस्सा होती थी कृष्ण की मैं को स्त्री का शरीर मिला है. I got cheated. तो मेरे के साथ धोखा हुआ. All the men get to be around Prabhupada and I got to sit in the back of the temple room, way in the back. तो सारे प्रभुपाद जी के वरिष्ठ शिष्य जो है सन्यासी लोग आगे बैठते थे, मैं बिल्कुल कोने में बैठी रहती थी. And I resisted my femininity. I just tried to be a man. I could prove I could outdo any of the brahmacharis. I became a man in a woman's body. तो मैं अपने आप को रोकने का प्रयास कर रही थी. बहुत ही एक तरह से जटिल था कि भाई मैं अब स्त्री के शरीर में होते हुए पुरुष बनने का प्रयास कर रही थी. I did that for 27 years. 27 साल तक मैंने किया. I did all the right things and I proved how good I was. I am so good. तो मैं सब कुछ किया वो ये साबित करने के लिए कि मैं कितनी अच्छी हूँ. And arrogant. कितने दम्भी हूँ. Arrogant about how good I am. कितने घमंडी हूँ कि मैं कितनी अच्छी हूँ. Now, later on in life, I realize Krishna was protecting me. तो जब मैं इतने बाद जब मुझे लग रहा है, अनुभव हो रहा है कि कृष्ण मेरी रक्षा कर रहे थे. If I can be that stubborn and arrogant for 27 years in a woman's body, तो अगर मेरे को 27 साल तक मैं इतना दम्भी और इतनी घमंडी हो सकती थी स्त्री के शरीर में, Krishna forbid, God forbid that I would be in a man's body. I would have been up here and fallen down before 27 years was over. I would have been in a position, I would have hurt a lot of people. He protected me. तो देखिए, तो अगर सोचिए स्त्री के शरीर में रह के इतना ज़्यादा घमंड है और जो ये घमंड है, तो अगर पुरुष के शरीर में होती तो 27 साल मैंने क्या क्या कर दिया होता, कई पोस्ट पोजीशन मिल जाती, कितने लोगों को मैंने कष्ट पहुंचाया होता. But I couldn't see that until decades later. तो मैं इस दशकों बाद में इसको देख सकती थी. So when we thank Krishna for everything that comes our way, तो जब हम धन्यवाद करते हैं कृष्ण का कि जो भी हमारे रास्ते में आता है, what do you want to teach me? क्या आप मुझे शिक्षा देना चाहते हैं? And we watch and we observe. तो हम देखते हैं और निरीक्षण करते हैं. Krishna can teach us a lot. कृष्ण हमें बहुत सी शिक्षाएं दे सकते हैं. Beating ourselves up is not respecting the gift that Krishna gave us. तो अपने आप को प्रताड़ित करना ऐसा है कि अपने जो कृष्ण ने हमको उपहार दिया है उसको अपमान करना. This human form of life is a gift. ये जो मनुष्य जीवन है ये एक उपहार है. It's our boat to take us back to Godhead. तो ये एक नाव है जिसमें हम भगवान के धाम जा सकते हैं. Generally, when we abuse ourselves, it's because we have a lot of pain inside. लेकिन आमतौर पे जब हम किसी को प्रताड़ित करते हैं तो इसका मतलब हमारे अंदर बहुत सारा कष्ट है, दर्द है. So much pain that, hurting ourselves feels better than the pain that we're feeling inside. तो इतना कष्ट है हमारे पीड़ा है कि जब हम दूसरे को कष्ट पहुंचाते हैं, उसको पीड़ा देते हैं तो हमको अच्छा लगता है. I know that pain. I have harmed myself previously. मुझे वो कष्ट पता है और पीड़ा पता है. मैंने अपने आप को इससे प्रताड़ित कष्ट पहुंचाया. However, the self-harm is creating more pain. It's not healing the pain that is
is inside. तो वो उससे हमें इस दर्द से छुटकारा नहीं मिल रहा, वो हमको और ज़्यादा पीड़ा पहुंचा रहा है. So finding some professional help to help us deal and heal with the inner pain inside from our childhood, from our last lives, healing that pain, then we don't have to continue inflicting it upon ourselves. तो अगर हम सीखते हैं किसी से कि इसको कैसे इससे लड़ना है या इसको कैसे इसको ठीक करना है, तो हमको और ज़्यादा अपने आप को पीड़ा पहुंचाने की आवश्यकता नहीं रहती. Does that make sense? Thank you, thank you, thank you profusely for your abundant and really wonderful questions, really deep, vulnerable questions. And I would love to continue this unlimitedly, and we can continue it, maybe not here, somewhere. Thank you from the bottom of my heart. And anybody who wants to get these books at the sale prices, I only have a limited number of copies. I have GPay. If you want to come up, I'll sign the copy. And if you have questions, I'll find a way to answer them, even if I can't answer them immediately right now. We'll figure out a way to connect. Thank you, thank you, thank you. Jai Srila Prabhupada, Srimad Bhagavatam ki. Srila Prabhupada ki. All the assembled Vaishnava devotees ki. हरे सुखवा माता जी की, Yadguru Srila Prabhupada ki. So once again we will heartily congratulate, thank Hare Sukhwa Mataji. So Mataji gave us her valuable association. So Paramata Puji was telling, Prabhuji बता रहे थे कि श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य और शिष्याएं बहुत ही दुर्लभ हैं. तो आने वाले 10-15 सालों में वो हो सकता है इस ग्रह पे ना रहें, किसी और ग्रह पे जाके प्रभुपाद जी की सेवा में जुड़ें. तो जितना हमको समय मिल रहा है उसको हम शीघ्रतापूर्वक उत्सुकता से लाभ उठा सकते हैं और श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य और शिष्याओं का संग प्राप्त कर सकते हैं. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. हरि बोल. सो आपको जितकी से भी कोई पुस्तक चाहिए तो आप माता जी से ले सकते हैं, उनके पास है, स्पेशल डिस्काउंट भी मिलेगा, माता जी का ऑटोग्राफ भी मिलेगा. तो एक बार फिर से जोर से हृदय से हम लोग माता जी का धन्यवाद करते हैं. कैसे करेंगे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे सुखा माता जी की जय. आप सब लोगों के लिए प्रसाद की व्यवस्था है, तो कृपया आप प्रसाद हॉल में जा सकते हैं. ब्रजवासी आने और गांव गए हो कभी परिक्रमा में? माई की पैदाइश ना मैं आया आप तो मैं ब्रजवासी आनंद में. हाँ हाँ आने और वृंदावन परसाना नहीं आने और गांव गोवर्धन से परिक्रमा. मैंने गुरु बनाया, यही व्यक्ति है मेरे लिए, वृंदावन यही ऐसी कर. नाइस. Thank you. Hare Krishna. What is my problem? I can purchase book, but I don't read. That is my problem. Okay. How to please rectify this problem? Please help me know. Well, you could start with this book. Okay. This is a story. Most people read it in like 3 days. It's like a movie.